വയനാട്ടിലെ പടമലയിൽ മോഴയാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ച അജീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അജീഷിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുറുവാദ്വീപിലെ ജീവനക്കാരൻ പോളിന്റെ വീട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലും ഗവർണർക്ക് ഇന്ന് സന്ദർശനം ഉണ്ട്. ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ സന്ദർശനം കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവർണറിന്റെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് എടുത്തോ. അജീഷ് മരിച്ച് നാളെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു മന്ത്രിയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് മാറി
ചെറിയ സ്പേസ്. ഓക്കെ കോപ്പി സാറേ കുറച്ച് എടുത്തൊന്ന് മാറോ മാറി ഞാൻ മാറട്ടെ. ഒറ്റ പ്രേമ ഏട്ടാ LCD എടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല. മതി മാറേട്ടാ ഞാനല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു
ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാം. പുറത്തൊന്ന് അറേഞ്ച് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത്
കൃത്യം മൈക്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെച്ചു. Not just the state government, central government. Okay, the central government are doing. ചേട്ടാ 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 ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ. ഒന്ന് സൈഡ് വരും ചേട്ടോ. ഒരു ഫോട്ടോ സാർ 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 ചേട്ടാ അപ്പുറം അപ്പുറം. हमारा परिवार आना चाहिए. പടമലയിൽ അജീഷിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ക്യാമറ വെക്കല്ലേ? But I'm giving an 60,000 salary job and 5 lakhs water fans support you. It's a pleasure along with you to do this. സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഗവർണർ മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി കുറുവ ദ്വീപിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന പോളിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഗവർണറുടെ യാത്ര. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരണം നടന്ന് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോ വനമന്ത്രിയോ മറ്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരോ എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഗവർണർ എത്തിയിരിക്കുന്നതും സന്ദർശിക്കുന്നതുമെല്ലാം. But now the collector is not taking the responsibility. This here is one thing the collector has the power to shoot out the wild animal. But the wild animal is protected by the law, but we are not. The collector is not ordering to shoot the wild animal. They are protecting the wild animal outside the field. Look sir, this is not a forest. This is our hometown. But the wild animal is coming and attacking, and no one is giving responsibility for our life. That's our concern. Not even police, not even forest, not any ward member or any representative. No one is taking responsibility of our lives. Everyone is protecting these wild animals. So we need 800 and above people are signing this one because we are afraid to live here. We are afraid to live here. It's part of a municipality. But the collector has the power, but the collector is not taking the responsibility. Also, the CCF is also not taking the responsibility. In Forest Act also, Section 11A, the CCF has the power to shoot out this wild animal. But still, after killing this man, the wild animal is still walking there for searching another one.
We are locating for shooting that, for capturing. Yeah, but we don't want to capture that wild animal and we don't want to protect that. Because Wildlife Protection Act from 1972 only. No, once they capture it, they won't then release it. They will keep it within some. No, sir. No. From Karnataka, after killing the man, they capture that, they put on radio collar and they release the way. So we are afraid of that. We are afraid that again they will do. One suggestion is there. This Mancheri Agashawani radio is there, but there is no frequency here. So few elephants they have just a radio collar and all. So which is not having there that radio collar, and the frequency, if it is available here this area, through radio they can give messages where it's moving and it can track, and that frequency if it is can make it. Their nearest place is Mancheri. This is information through radio. Immediate. What do you do? You are also farmers or you are a lawyer? I am an ordinary man, but these bureaucrats are teaching me the law. For survival only we are studying the law. അജി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനവും ഇവർ ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Yes. So what we have written that the problems that we are facing for the animals and solutions, we are not getting any of the solutions and protection from the government as well as from the public, other places people. So our concern is that we need protection from the. Yeah, we have suggested that. सर हम यहीं के रहने वाले हैं, हम इस गांव का है, हम जितनी परेशानियों में चलते हैं उसके बारे में शायद आप तक के पहुँचते पहुँचते इसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। ये कर्नाटक से जो रिलेटेड हमारी जितनी फॉरेस्ट लंबी है उसके हिसाब से अपने लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। जानवर के लिए सारे सुरक्षा है, यहाँ आ गया मैं मार के जानवर को बचा के ले जाते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारा जो बॉर्डर से लेकर के यहाँ पर कबिनी रिवर है तकरीबन 50 किलोमीटर कोई सुरक्षा के लिए कोई संबंध नहीं है। आप केंद्र सरकार का नुमाइंदा है, हमारी संविधान का हिस्सा है, आप इस हमारी एरिया का प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर फेंसिंग का रिक्वायरमेंट है सर। हमें इन जानवरों को हमारे पास आने से रोकना है सर। हमें अपनी जान बचाने के लिए शायद हो सकता है कभी अटैक हो गया तो हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, उसमें जानवर का नुकसान हो गया तो इस परिवार उस गाँव की बर्बादी है। इस कानून जो बनाया हुआ कानून के हिसाब से जी नहीं पाते। Police in the senior staffer. So you have made some solutions. We have just written the solutions. What is already happening in the all over the world, and the fencing and ditching
റിപ്പോർട്ടർ താത്തു आखिर में एक छोटी सी पॉइंट, हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नीचे वाली स्टाफ की इतनी बुरी हालत है, उन्होंने जब हाथी भगाने या टाइगर भगाने के लिए आते हैं, उनकी खुद की बचाव के लिए कोई हथियार अवेलेबल नहीं है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। बिल्कुल सर, हमने इस चीज़ के बारे में हमारे उच्च अधिकारियों से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास गिने चुने 1 या 2 या 3 4 हथियार है, कहीं से इस इलाके में प्रॉब्लम आ गया, वहीं से उधार लेके आ गया, 2 दिन में उधर प्रॉब्लम वापस आ गया, लेके चला गया। इस इलाके का तीनों साइड फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, जंगली इलाके से में से जानवर आते हैं अटैक करते हैं और वहीं से उधार लेके आ जाता है, फिर वापस करना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सफिशिएंट वेपन्स आप खरीदने का कुछ कर दीजिए सर, क्योंकि हमारी बच्चा लिखा है और नोटिस है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन इतनी बातें सुनूंगा नॉट पॉसिबल दैट आई विल रिमेंबर देम डिस्टिंक्टली। आई विल रिमेंबर दैट सर। अब हर चीज़ पूरे डिस्टिंक्शन के साथ याद जी सर, हर चीज़ को नोट एवरीथिंग हियर सर जो कमी पे से my suggestion is that if it is one representation, अच्छा यू हैव डन इट पॉइंट जी सर, वेरी गुड। ये हमने छोटी सी समय में जितने भी हो सकता है हमने लोगों की हस्ताक्षर लेकर के आपको दे रहे सर। हमारी हस्ताक्षर वन पर्सन हस्ताक्षर इज बट यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स विद सम सजेशन दैट दिस इज व्हाट सर मेन सजेशन सर इस ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रॉपर इक्विप कीजिए सर, क्योंकि इस जानवर को डिफेंड करने के लिए फॉरेस्ट वाले के पास जरूरी वेपन होना चाहिए, उसको मारने के लिए नहीं सर, उनको अपनी बचाव, हमारे जैसे हम जो गांव वाले किसान के जैसे वो भी एक परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी बचाव भी बहुत जरूरी है सर। जरूरी हम उनके पीछे खड़ा हो सकते हैं, हम उनके आगे जा नहीं सकते हैं। जब हमारी मदद मांगते हैं सर, हम पूरे जोश के साथ उनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन हम उनसे आगे नहीं जा सकते हैं। जब हमें विश्वास होना चाहिए कि ये हमें बचाएंगे, तो खुद को बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है सर, हम क्या इनको पीछे जाएंगे सर। जोड़ी से मैं एक बहुत बड़ा सैनिक सर, आर्मी से रिटायर दो तीन इनका फोन नंबर आपको कोई लिखा 744 whatever today I have not come here to make a survey about both India. I have come but whatever you have given, I assure you, whatever best I can do, I shall do. Okay. Thank you.